technology that is built for your every sense. Acer Pure from Acer. On and shift our focus to the other big story of the day. 5 days after tabling the 130th Constitutional Amendment Bill in the Parliament, Union Home Minister Amit Shah came out all guns blazing to argue in favour of the proposed legislation, and at the same time tore apart his critics for their double standards when it comes to probity. On Amit Shah's radar were two of the biggest critics of the new bills. One who he credits for the conception of these anti-graft laws, the other who he questioned for his hypocrisy on morality. We are talking about Arvind Kejriwal and Rahul Gandhi. In a no-holds-barred onslaught, Amit Shah reminded all of the theatrical incident in 2013 when Rahul Gandhi shredded an ordinance brought by the then UPA government. In fact, the ordinance actually aimed to shield Lalu Prasad Yadav, convicted in the fodder scam. He went on to ask what has happened between 2013 and now that Rahul Gandhi is hugging the same Lalu Prasad Yadav, who has been convicted in multiple cases related to fodder scam. Union Home Minister cited this as the reason for Congress's 3 consecutive poll defeats. Amit Shah also gunned for Arvind Kejriwal, who did not resign after being jailed. Amit Shah asked why, despite High Court leaving it up to the Delhi Chief Minister to quit, Kejriwal continued to govern from behind bars. And why did he brazenly defy the political tradition of resigning before being put behind bars? पहले कानून बने होंगे, संविधान बना होगा, तब संविधान निर्माताओं ने ऐसी निर्लज्जता का कल्पना नहीं करा होगा कि कोई भी मुख्यमंत्री जेल में जाएगा और अंदर से मुख्यमंत्री बना रहेगा। लालू जी के वो ऑर्डिनेंस फाड़ने का, लालू जी के बचाने के लिए जो ऑर्डिनेंस मनमोहन सिंह लाए थे, वो ऑर्डिनेंस को फाड़ने का राहुल गांधी का औचित्य क्या था? अगर उस दिन वो मोरालिटी थी तो आज नहीं है क्या? क्योंकि आप लगातार 3 चुनाव हार चुके हो। हाई कोर्ट में जब केस गया कि श्री केजरीवाल जेल में है, तब उनको वहां से इस्तीफा देने चाहिए। एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल हुआ। हाईकोर्ट ने कहा कि हम सैद्धांतिक रूप से मानते हैं कि इनको छोड़ देना चाहिए मॉरल ग्राउंड पर, परंतु अभी के कानून में कोई प्रावधान नहीं है। अगर ये कानून होता तो उनको इस्तीफा दे देना पड़ता, वो जो मैं मानता हूं कि देना चाहिए। बाहर निकलकर जब पब्लिक विरोध करने लगी तो उन्होंने दे भी दिया। Now viewers, Arvind Kejriwal was arrested in March last year by the Enforcement Directorate, making him the first sitting Chief Minister to be arrested. In his first reaction since the bills were tabled, former Delhi Chief Minister hit back at Amit Shah and said that if a minister who inducts tainted leaders should also resign. He called his arrest a political conspiracy, adding that his 160-day-long government from prison was better than the current BJP dispensation. जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता कि सरकार कहां से चल रही है, एज लॉन्ग एज जनता के काम हो रहे हो, एज लॉन्ग एज सरकार जनता के हित में काम कर रही हो, ना कि जनता के खिलाफ। या आप दिल्ली के किसी भी कोने में जाकर पूछिएगा और आपको हर जगह यही सुनने को मिलेगा कि हम तो अरविंद केजरीवाल जी की जेल की सरकार मिस कर रहे हैं।